If you want your children to be intelligent, read them fairy tales. If you want them to be more intelligent, read them more fairy tales. Albert Einstein said these words because he felt that childcare is the most important thing for our better future. Hi, I'm Kanishk Pandey, and I welcome you all to our edCafe online version. This is the first time that we are trying this, and I believe that your feedbacks will make it more and more accessible. This is our initiative to reach out to people who are not able to come to our location and talk to us. Everything remains the same. We bring in the same educators, even more, even better, and we try to gather their experiences, their hardships, their success stories, and bring them to you. Today we're talking about childcare. In past few years, childcare has moved from homes to education. The names have changed as well. Today we call it student wellness. A lot of people are working towards creating a wellness ecosystem for the students. Today we don't just talk about toddlers; we talk about elder students as well, who are in higher education, is even who are in higher education. Our guest today is one of the experts from the industry, one of the very few experts from the industry who is actually taken up this task of creating a preventive healthcare setup for students only. The company is known as Educure or Plan Your Health, planmyhealth.in, and the person we're talking to is the CEO, Mr. Akshay Shah. I'm going to bring him in very shortly, and we'll talk to him. We'll ask him what all questions, what all things that he's planning to, and I think I should stop and bring him in now because I'm going to talk about it. Let's see what he has to say. Hi Akshay, Hi Ganesh, how are you? all good. Thanks. Akshay, thank you first of all. Thank you very much for coming in and taking out your time. My And pleasure. actually, uh, today we are talking about wellness. Today we are talking about preventive care for students. Today we are talking about anything and everything related to health. But before we start, tell us about yourself. Yeah, so the journey began long back. I think we're talking about 6 years back. The journey began, and we started thinking about we should be doing something for the students who are studying in the schools. Because we were doing a lot of work related to employees in the corporate houses, so we realized the fact that uh, for employees to be more productive, they need to be taken care from the health perspective. And sooner then we realize the fact that if employees need any kind of healthcare system or any kind of healthcare prevention, uh, also the students who are studying in the school, because they also need to be productive and there's immense pressure on them for the academic, sports and other things. We realize the fact that the best thing we can do for them is take care of their health, prevent them from future health risk, and Yes. make sure that they remain healthier and of course into well-being. And that's where the journey began. वी फर्स्ट थॉट कि टू अंडरस्टैंड किसी भी बच्चे की हेल्थ को समझने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसकी ओवरऑल हेल्थ सिस्टम को पहले समझे। वो क्या, उनकी फिजिकल हेल्थ कैसी है, उनकी मेंटल हेल्थ कैसी है, उनकी खाने की हैबिट्स कैसी हैं, और उससे ही उनकी ओवरऑल हेल्थ डेवलपमेंट होता है। तो हमने हर एरिया को सोचा और सबसे पहला जो प्रोग्राम डिजाइन किया, दैट प्रोग्राम वाज बेसिकली कॉल्ड स्टूडेंट हेल्थ चेकअप. And in that, what we were doing very differently was we were sending 5 different doctors, which consist of general physician, dentist, eye specialist, dietitian, and psychologist to the school premise. And every student was getting access to all the 5 specialists. तो हर एक बच्चे का अपना एक चेकअप हो रहा था डिफरेंट एक्सपर्ट से, और उस असेसमेंट रिपोर्ट को हमने रीड करके पेरेंट्स तक पहुंचाया, ताकि उनको ये मालूम पड़े कि उनकी बच्चे की ओवरऑल हेल्थ स्टेटस क्या है इस टाइम पे। और उसके बेस पे हमें बहुत कुछ डेटा भी मिला, जिससे हमें मालूम पड़ा कि डेटा किस तरफ ट्रेंड कर रहा है, और हमने उसके बेसिस पे
नए नए प्रिवेंटिव वेलनेस आइडियाज डेवलप किए, जिसको हमने स्कूल में इम्प्लीमेंट किया. Okay. So in this 6 year journey, we have implemented more than 300 schools, and it was a successful implementation. And we moving from what we did from health checkup, we also started focusing on how we can do the continuous care for the students. जिसके लिए हमने उनके लिए स्कूल में ही क्लिनिक डेवलप किए, जहाँ पे नर्सेज, डॉक्टर और एम्बुलेंसेस डिजाइन किए, और जिसके बेसिस पे वो कभी भी बच्चा किसी भी पॉइंट पे हेल्थ का कोई इशू उनको फेस करते हैं, तो वो इमीडिएटली उनको केयर मिल जाती है इंफर्मरी सर्विस या सिक रूम के नाम पे, जो स्कूल में नॉर्मली इज नोन. हमने वो डेवलप किया. और अभी हम 4 टाइप की डिफरेंट सर्विसेज करते हैं, राइट फ्रॉम साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट फॉर द स्टूडेंट्स, आल्सो वी आर फोकसिंग ऑन फिटनेस डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स. जो स्पोर्ट्स में परफॉर्म करना चाहते हैं, उनका फिटनेस डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है. तो हम चारों एरिया में काम करते हैं, और फिटनेस, साइकोलॉजी, continuous care in the form of clinic, and the health checkup is a prevention tool what we use. So yeah, it's been a great journey. I think along with the commercial, I think it was a very good social cause which we are Absolutely, it able to was do a it great for the cause. society, and because this was I a think major concern for the parents. absolutely. Yes, that's what I was coming to. Parents have been concerned over and over the years कि भाई बच्चे को हम तो ध्यान रख रहे हैं, मगर जब हमारे हाथ से निकल के जा रहा है बच्चा, स्कूल जा रहा है, कहीं बोर्डिंग स्कूल जा रहा है, या कहीं पे भी जा रहा है, एजुकेशन के लिए जा रहा है, हायर एजुकेशन के लिए जा रहा है, तब उसकी केयर कैसे हो रही है. आई थिंक बिल्कुल. दीज थिंग्स प्रिवेंटिव केयर हेल्प्स अ पेरेंट फॉर इन द एश्योरेंस कि भाई हाँ मेरा बच्चा सेफ है. So, Right. talking about it, how did you manage to get into the education industry? I mean, आप generally आप बच्चों को directly भी reach out कर सकते थे, but you chose education. Why? Why education particularly? So when we designed this idea, the first thing was to approach a nearest school, what we had from office. So we reached out to them and we realized a fact. In fact, this was a very good pointer. कि most of the principals were concerned about the student health, because ये पता चल गया था principals को कि बच्चे 7 से 8 घंटे स्कूल में स्पेंड कर रहे हैं, और उनकी मेजर अगर कोई हेल्थ इशू, इन्फेक्शन होता है, कुछ होता है, या फिर बच्चा जैसे फॉर एग्जांपल बच्चा आंखों से वीक है, तो वो शायद बोर्ड पे ज्यादा फोकस नहीं कर पाएगा. बच्चा अगर सपोज ओबीज है, तो शायद स्पोर्ट्स में परफॉर्म नहीं कर पाएगा. बच्चा अगर मेंटली फिट नहीं है, तो शायद वो कभी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में परफॉर्म नहीं कर पाएगा. तो ये बातें प्रिंसिपल भी समझने लगे थे, और हमारे लिए सबसे इजी था मल्टीपल स्टूडेंट तक पहुंचना स्कूल के थ्रू. तो हमने पहली अप्रोच वही रखी, और मेजरली सारे principal were very supportive. Most of the principals we work with, they always emphasize on this health concern of the students. Or initially, they took it as a sake of it activity, but then they got serious about it. They used to ask us questions, things and all. We used to create a lot of awareness activity for the parents. तो अल्टीमेटली हम पैरेंट तक ही पहुंच रहे हैं, क्योंकि जो मे बी द रूट इज थ्रू स्कूल, बट बिकॉज वी हमारा जो सबसे बड़ा एक इम्प्लीमेंटेशन था, जो प्री स्कूल चेन के साथ था, जहाँ पे सारे कैंप में जितने भी हमने कैंप स्टैब्लिश किए, सब में पेरेंट्स भी आते थे, क्योंकि बच्चों का एज बैंड 2 to 5 था, तो ज्यादा पेरेंट्स आते. तो पेरेंट्स से हमें डायरेक्ट एक्सेसिबिलिटी मिली. पेरेंट्स ने बहुत अप्रिशिएट किया प्रोग्राम को, क्योंकि उन लोगों ने वो सारे क्वेश्चन पूछे जो नॉर्मली वो एक्सेस नहीं कर पाते. छोटी सिटीज में डाइटिशियन, साइकोलॉजी इतनी जल्दी उनको एक्सेसिबल नहीं मिलते हैं. हमने उन्हें एक्सेसिबिलिटी दी ताकि उन लोग उनसे वो क्वेश्चन कर पाए जो नॉर्मली उन्होंने नहीं पूछे थे, कि बच्चों को क्या खिलाना चाहिए, बच्चा अगर इस वे से बिहेव कर रहा है तो उसको कैसे ट्रीट करना चाहिए, क्या उसको गाइड करना चाहिए. Okay. तो उन एरियाज में हमें बहुत सपोर्ट मिला पेरेंट्स का, स्कूल्स का, and that's how we reach out to most of the parents, students and schools. That's a good thing. That's a good thing. 300 से ज़्यादा स्कूल आपने Yes. अचीव करे हैं, एंड इट्स अ फिनोमिनल नंबर. आई बिलीव अगर आप क्या किस तरीके से करा ये तो मैं जरूर आपसे जानना चाहूंगा, मगर टाइम का बहुत थोड़ा कंस्ट्रेंट है हमारे पास. Sure, बट sure, यस, आई वुड डेफिनेटली लव टू नो हाउ you reached out to 300 schools. But my question to you is, apart from reaching out to schools, for your program, are you using some sort of technology, some sort of application, or is it a web-based thing, or a physical reach out? So yes, we have developed a technology which basically creates a lot of data analysis along with the medical record management.
जो भी बच्चों के हम चेकअप करते हैं उनको मेडिकली रिकॉर्ड को मैनेज करते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड सिस्टम में। और जैसे ही वो रिकॉर्ड स्टोर होते हैं उन रिकॉर्ड्स को हम एनालिसिस के लिए भेजते हैं, जिससे हमें समरी बन के आती है किस टाइप के बच्चों में क्या क्या हेल्थ इश्यूज है। फॉर एग्जाम्पल, हमें मालूम पड़ा डेटा एनालिसिस से कि 25% बच्चे डेंटल से सफर कर रहे हैं, या 20% बच्चे डाइट से सफर कर रहे हैं। फिर हम उसकी कोरिलेटिव स्टडीज करते हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू कि जितने बच्चे डेंटल से सफर कर रहे हैं क्या वो डाइट से भी सफर कर रहे हैं। इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल, जितने बच्चे जंक फूड खा रहे हैं डाइट में, क्या उनके ज्यादा दांत खराब है। तो इससे हमें मालूम पड़ा कि हाँ ये कोरिलेटिव स्टडी है कि हाँ ज्यादा बच्चे जो जंक फूड खाते हैं उनके दांत भी नॉर्मली दे गेट कैविटीज एंड एट अर्ली स्टेज। So yeah, technology is a very important role play in our entire system, and we manage entire electronic medical record. We give the report over the app, web, email, the way they want it, along Yeah. with a very detailed analytical report. Along with that, we give them school detailed analytical report, which talks about कि how many students of the school, because school के लिए वो important है कि मेरी school की overall health क्या है, हम वो भी Okay. technology के through उनको देते हैं. That's Of a course, that's a हम medical record manage पूरा करते हैं. that's a beautiful Technology thing. is very important to us. Absolutely, it is. It is. I think technology should be implemented wherever possible. I am a very firm believer, a very big advocate of technology wherever I go. Being Right. in the education industry, being in the edtech industry, I personally feel that most educators are still very apprehensive about implementing technology because True. somehow they feel that it will replace their efforts. But that's not how it is. It will But I simply believe technology is just an enabler. It doesn't do any harm to anything. It's it just an simply enabler, it simply eases out your effort, and of it course. helps you do more. Of course, And it's a scalable tool. You can scale it to any level and any so, geographical limits. having said that, just can you tell us about your backend approach, as in so 300 schools we're talking about. We're probably talking about more than 1 lakh students at least, right? And We done 2 lakh plus students so far. 2 lakh plus students we're taking care of. Can you tell us the number of medical people, medical staff, doctors, nurses, or what sort of thing backend you have? I mean, I'm just curious to know about this. Of That course, of course. We have all over India 5,000 plus doctor accessible to us, which are tied up with us, of course, and a lot of hospitals, diagnostic centers, along with that, which are connected to us. What we do is that we use the entire medical ecosystem, uh, connect them for the prevention. This is what our major focus is on. So जो प्रिवेंशन के जो पॉइंट होते हैं, क्योंकि प्रिवेंशन में हमें राइट क्वालिफाइड डॉक्टर चाहिए, हमें कोई yeah, ट्रीट नहीं करते हम, वी आर नॉट अ ट्रीटमेंट कंपनी, वी नॉट अ क्योर कंपनी, वी आर मेजरली फोकस्ड ऑन हाउ कि हम बच्चों को बीमार पड़ने से रोक कैसे सकते हैं। low cases. तो हमारा मेजर फोकस हुआ है, तो हम जो डॉक्टर्स हैं जो अवेलेबल हैं जिनका स्पेशलाइजेशन प्रिवेंशन में, हम उन डॉक्टरों को बुला के, फॉर एग्जांपल जैसे जैसे प्ले स्कूल है जहाँ पे Mhm. 2 से 5 साल के बच्चे हैं, तो उधर हम पीडियाट्रिशियन को बुलाते हैं, क्योंकि वो एज बैंड में वैक्सीनेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नो Yeah, कि वैक्सीनेशन हुआ है कि नहीं बच्चों का। तो हम पीडियाट्रिशियन को बुलाते हैं। डेंटल में भी हम पीडियोडोंटिस्ट को बुलाते हैं ताकि उनका जो डेंटल में जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं वही उनका चेकअप करें। okay. तो हम ऐसे मेजरली फोकस करते हैं। हमारा पूरा नेटवर्क स्पेशलाइज्ड डॉक्टर से लेके जनरल डॉक्टर से लेके डाइटिशियन एक्सपर्ट्स, साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट, आई स्पेशलिस्ट, सारे लोगों से अच्छे टाइप है पूरे इंडिया में। और हम हर एक हमने ऐसे ऐसे लोकेशन भी इम्प्लीमेंट किए हैं जहाँ पे 50 किलोमीटर तक डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। तो हमने वैसे लोकेशन पे भी डॉक्टर को ट्रांसपोर्ट करा के, डॉक्टर को वहाँ पहुंचा के फिर हमने उनके चेकअप किए हैं। So That's a geographical is not a limit, and technology, as you said, is a big enabler for us. बहुत जगह हम टेक्नोलॉजी के थ्रू भी चीजें करवा लेते हैं, तो हो and जाता है, मैनेज हो जाता है। और डॉक्टर हमारे साथ बहुत अच्छे लेवल पे जुड़े हुए हैं, तो किसी भी पॉइंट में कोई भी स्पेशलाइजेशन चाहिए हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। that's a good thing. That's a great thing, actually, Akshay. Um, Now, the next question is a bit awkward or maybe प्लीज funny. प्लीज, नो Uh, प्रॉब्लम। how do you compare your the that you're doing today, and if you go back 20 years or maybe before that in your school times, how do you compare that
era and the era that you're facing right now? Because right now you're on maybe on probably on the other side of the table, right? तो अब आप कैसे देख रहे हो उस वक्त के स्टूडेंट, एज अ स्टूडेंट आप खुद उस टाइम पे क्या सोचते थे, और आज आप जो ऑब्जर्व करते हो कि स्टूडेंट क्या सोचता है एंड ऑल दैट, हाउ डू यू कंपेयर दैट? कैसा लगता है आपको उस टाइम आप देखते हो जब आप उस चीज को? इनफैक्ट 20 years बैक तो मैं स्टोरी जरूर बताऊंगा आपको, बट एक स्टोरी और बताऊंगा कि प्री पेंडेमिक टू नाउ द स्टोरी आल्सो चेंज बिग टाइम। जो लोग हेल्थ को बहुत सीरियसली प्री पेंडेमिक नहीं लेते थे, आज की तारीख में, बिकॉज एंटायर वर्ल्ड हैज शट डाउन बिकॉज ऑफ हेल्थ, या so I think the health has become now prime. Also, the राइट schools as a infra also looking as health as the most important subject, because they know कि कल उठ के अगर उनकी स्कूल में कोई बच्चे इन्फेक्ट हुए और उससे वो पूरी स्कूल इन्फेक्ट हुई, it's a big concern and big risk area, and for the parents also is a big risk concern. So of course the things have changed drastically even after the pandemic, to be very honest. Going back to 20 years, that time, and I was never access to, or I was never was connected to any healthcare system in my school or college times. Because that time the health was always taken as a concern for the parents, not for the school or the college. So yeah, things have changed drastically from that time to this time. But I don't blame that system either, because that time even healthcare system not had much of prevention implemented in India. प्रिवेंशन हैज बेसिकली जो इंडिया में आया है वो लास्ट 15 सालों में आया है, जहाँ पे लोग रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाते हैं साल में एक बार, या फिर चीजें होने लगी, डेंटल भी ऐसे ही चेकअप करवा लेते हैं साल में एक बार, कि जस्ट क्लीनिंग करवा लेते हैं। तो कुछ प्रिवेंटिव आइडिया जो हैं वो इंडिया में अभी 15 सालों में प्रिवेल हुई हैं। तो उसके कारण से मुझे लगता है कि आई डोंट ब्लेम द सिस्टम, बट देन या टुडे आई थिंक पेंडेमिक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, आई थिंक लोग ज्यादा अवेयर हो गए हैं हेल्थ को लेके। अब लोग सच में अपनी फूड को, हैबिट को बेटर करें, इम्यून सिस्टम पे फोकस करते हैं। तो आई थिंक या इट हैज चेंज बिग टाइम। Pandemic has been, I was talking to one of the educators, and he said that pandemic has been a catalyst in the evolution of education. We all have learned from it. I think Yeah, we, we all of all us. have, It we was all a have. difficult learning. It was a hard learning, but then it was a great learning, because It was. इम्यून सिस्टम जो वर्ड हमारे दिमाग में कभी आता नहीं था, हम सब सोचते नहीं थे, Yeah. आज हम सोचने लगे कि हमारा इम्यून स्ट्रांग होगा तो लड़ पाएगा किसी बीमारी से कुछ। इसलिए हम, आई थिंक प्रिवेंशन, इम्यून बेसिकली अब प्रिवेंशन ही है I लॉजिकली। remember my school days, Akshay. So I was lucky enough to have an infirmary inside the school. मगर उसमें ये होता था कि अब हाँ भी पेट में दर्द है तो पुदीना खिला दिया, और थोड़ी देर लेट गए, बुखार सर दर्द पेट दर्द के बहाने से हम चले आते थे और वहां पे लेट और जाते थे। कभी कभी नहीं होता तो भी चले जाते हाँ, कभी नहीं होता तो भी चले थे। जाते। जबरदस्ती तबीयत खराब होती थी और 2 घंटे ज्यादा पेरेंट्स जाते थे लेने के लिए। अगर होमवर्क नहीं किया तो भी चले जाते थे। So we've made use of that, but now I'm happy to see how things are evolving now, and I'm lucky to be in this era, to see this, to experience this, because preventive healthcare is the next in thing, for Yes, not just for kids, for everyone, for that matter, for even for for us. everyone. Right? Um, that's a good thing. You've partnered with eUPP you've a few months back, and eUPP is in itself a revolution where we are trying to bring in the student ecosystem, the financial ecosystem of the students, with along with rewards, right? And your program, your packages, your products are very crucial to that part as well. But how do you see that partnership growing? How do you synergize with that? So yeah, the moment I came to know about EOPP and we connected over this, the first thing what I realized with EOPP is the vast network they have with the schools and all, and the kind of network connectivity they've done, and the kind of problem they are solving, which is related to finance and the entire ecosystem related to finance. Um, we realized they are doing very important role in the school, and we realized we also going to be one of the most important aspect of the school in the future. We saw this partnership going as a long-term partnership, and we realized the fact that if we do a hand-on-hand kind of partnership, we can really strengthen the school.
from the financial point of view coming from you, and a healthier point of view coming from us, and Absolutely. we see solving a lot of other problems together. So yeah, it looked to be a very important partnership to us. We believe that it will be a longest term partnership, and we will definitely ease out a lot of ecosystem and a lot of problems related to schools and education institutes. We have all the confidence in you, and we have no doubt whatsoever in your program. And we believe that with UPP and its reward program, the preventive healthcare will be pushed in the schools as much as possible. Sure. With that, I thank you very much again for giving us your time. And it has been very lovely talking to you. I learned so much. You just took me back to my school days. And I'd love to talk to you about all these things more and more. And we would like you to come back again and talk about Anytime. your experiences, what all you've been experiencing so far, right? But today I take your leave, and then again, thanks a lot for coming in. Thank you, Ganesh. Thank you for inviting me, and lovely talking to you. So we will remain connected, and definitely we'll talk more as the Thank you. things come. I think we are open to talk more about a It lot of will health be. It issues, will be. a lot of things, wellness, prevention, medical services. I think we have a lot of other topics. We'll definitely keep connecting on this. We will be. We will be. Thanks, Thank Ganesh. you, Akshay. Bye Thank bye. you. Thanks a lot. Thank you. Bye. So that was Akshay Shah, and very lovely talking to him. Preventive healthcare, yes, it is the most important thing now, especially when the pandemic has just passed, just closely passed us, and we're not sure if it's gone yet, but soon it will be. Touch wood. Apart from that, if we want to get into some sort of things like that, we should not refrain from things. We should not refrain from technology because it is an enabler for us. Having said that, I would like to take your leave. I thank you all for joining us, and we'll be bringing in more and more more and more educators, more and more people like Akshay himself, and a lot of things that we're gonna do are gonna be amazing. But with that, I'm not gonna give you any spoilers. You watch us out for our next video. Another great person, another great experience waiting for you on the other side. I take your leave. My name is Kanish Pandey. Bye bye.